So hey guys, how are you doing? In this video for UPSC CSC 2025 examination, today we are going to talk about X-band radar and which has been in news for because MOES has recently approved X-band radar for Wayanad Kerala. तो हम सबको पता है वायनाड केरला में 30 जुलाई को एक बहुत ज्यादा बारिश हुई थी एंड आफ्टर टोरेंशियल डाउनपोर विच ट्रिगर्ड कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड अप्रोक्सीमेटली किलिंग मोर देन 200 पीपल। और इस तरह की ट्रेजिडी दोबारा ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक रेडार सिस्टम जिसको एक्स बैंड रेडार सिस्टम बोलते हैं उसको अप्रूव दे दिया है, उसको अप्रूवल दे दिया है, राइट। तो आज हम बात करेंगे ये एक ये मैप है एंड दिस मैप यहाँ पर वयनाड, दिस इज द वयनाड, राइट। वयनाड इन केरला, वयनाड इन केरला, ये नॉर्दर्न रीजन में है केरला के। और यहाँ पर कुछ इस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी एंड सच काइंड ऑफ ट्रेजिडी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एक्स बैंड रेडार सिस्टम। In this video, we are going to talk about how radar works, radar system है क्या, radar system radio waves को use करते हैं and we are going to talk some basic of electromagnetic radiation, right? This video is going to be very short because this entails basic concepts. तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब होता है रेडियो, बिकॉज रेडार का सीधा फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राइट। तो मतलब रेडियो वेव्स को यूज करके हम पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को। और इसका जो बेसिक फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स इज वेरी सिंपल। तो यहां पर एक ट्रांसमीटर होगा, देयर इज वन ट्रांसमीटर व्हिच ट्रांसमिट रेडियो वेव्स, राइट। और सपोज करो इस ट्रांसमीटर ने यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जैसे ही ये रेडियो वेव्स क्या करती है, स्ट्राइक करती है, इट गेट इकोड बैक, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। और लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, तो लेट मी शो यू बेसिक मैथमेटिक्स। दिस डिस्टेंस इज से डी, तो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, 2d. This is the velocity of electromagnetic radiation. So velocity will give you time, right? So velocity equal to distance divided by time. So time will be distance divided by velocity. And why 2d? Because distance जाने में भी लगी और कवर आने में भी लगी। इस तरह से बेसिक इसका फंक्शन है। तो ये करता क्या है, रेडार सिस्टम करता क्या है, लेट मी टेल यू हाउ व्हाट इट वर्क्स। यहाँ से ये रेडियो वेव्स को क्या करेगा, यहाँ से पल्स को भेजेगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी तो यहां पर एक रिसीवर होगा एंड दिस रिसीवर विल रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट विल एनालाइज द डेटा। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो होगा क्या, एक्स बैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं, रेडार सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो आप लोगों को पता होगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर दोज waves are something which carries momentum and energy. Mechanical waves are those waves which needs material medium, they need material medium, okay, without medium they don't travel, right? So there is no propagation without medium, right? They don't travel in vacuum, vacuum के लिए ये नहीं होती है। तो एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल वी हैव साउंड वेव्स, साउंड डजंट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो एक पहला ध्यान रखना। दूसरा वाटर वेव्स, तो वाटर वेव इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव। वेव्स इन स्ट्रिंग इज ऑल्सो another type of wave which is mechanical wave, right? There are two types of mechanical waves: longitudinal waves in which there are parallel vibrations and there are perpendicular vibrations for transverse waves, right? Second wave type is called matter waves. We will not talk right now about matter waves. Matter waves was proposed by de Broglie, and de Broglie said matter has dual nature. It under certain conditions it behave like waves and under other conditions it behaves like what? It behaves like particle. So let me tell you this. तो मैं इसको एक बॉक्स में डाल के बता देता हूँ आपको। तो दिस इज द कंडीशन, ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर, तो लेट मी फाइंड बॉक्स फॉर इट। so there is one shape for it. So this is the condition for h equal to, तो यहाँ पर ये ऐसा दिख नहीं रहा है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज लैम्डा इक्वल टू h ओवर p। एंड व्हाट इज h, अगर आपने कभी बेसिक साइंस पढ़ी हो तो h को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। एंड दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, its value is 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule into second, and this thing is signature of quantum mechanics. It means it talks about microscopic particle, okay. So we will talk about it some other day. Let's talk about third type of waves. Third types of waves are electromagnetic waves. They are electromagnetic waves, EM waves, right? Electromagnetic waves, they were proposed by, these waves were proposed by Maxwell. Okay, this is from Maxwellian physics and they don't need medium. You know what is the definition?
but the medium is not required. For them, medium is not required. Essentially, electromagnetic waves, if you know the basic terminology, they are basically vibrations of electric field, vibrations of magnetic field, and there is one is the direction vector. Okay, suppose in x direction there is magnetic field, in y direction there is electric field, then z direction will show its the direction of the wave, right? So this is the idea. Electromagnetic wave, it is actually basically there is a spectrum of electromagnetic wave. It means it consists of waves of many kind of wavelengths, different types of wavelengths or different types of frequency, right? So let me show you this. Okay, here we go. This is the spectrum. You can write it like this. Suppose, so if I were to use this, okay, so I am using this pen. Okay, suppose this is radio waves. Okay, this portion is radio waves. तो लेट मी टेल यू समथिंग, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं इस डायरेक्शन, देयर इज वन डायरेक्शन आल्सो, लेट मी फाइंड आउट एन एरो. दिस एरो इज शोइंग मी, वेयर इज एरो. ओके, तो एक बार मैं आपको एरो बता दूं. तो ओके, लेट मी सेलेक्ट एरो. दिस एरो इज शोइंग वेवलेंथ. These are very basic terminology. This direction is of wavelength. Okay, lambda shows wavelength. Wavelength is simply distance covered by wave in one full cycle, right? So this is wavelength. So okay, this is wavelength. This is direction of wavelength. This direction shows frequency, and for frequency we use this symbol nu. This is direction of energy also, and from here we can conclude lambda is inversely proportional to nu, right? If wavelength is higher, then frequency will be lower. We know all these things, right? So this is radio waves, and then there is microwaves, there is infrared waves. Infrared waves are called heat waves. Microwaves, we know it is used in microwave oven. These are short radio waves, by the way. Then we have this visible part, right? This visible part which we call Vibgyor, Vibgyor, Vibgyor. This is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and its wavelength is approximately 400 nanometer to 700 nanometer. If you don't know nanometer, 1 nanometer is approximately, or it is equal to, by the way, 10 raised to power minus 9 meter. Then we have ultraviolet radiation, then we have this X-ray radiation, and then finally we have this gamma ray radiation. Gamma rays are something which have higher energy, highest energy, right? Thankfully, these waves, this reason, these waves do not reach to the earth. So our eye, human eye can detect only this portion, which is called visible part, right? They are not harmful, they don't have much energy. These are called heat waves, which are responsible for, so we will talk about them sometimes later. Heat waves are responsible for greenhouse, greenhouse effects. Greenhouse effects means simply warming of atmosphere of the earth. Microwave, 2.4 gigahertz waves, they are very, very important. We use them in microwave oven, we use them for Bluetooth, we use them for Wi-Fi and all. This is very important for UPSC point of view, because this question has been asked earlier also. Now, this is radio waves. So radio waves have highest wavelength, their wavelength is highest, long wavelength, and they have short frequency, and therefore they don't have much energy. They are low energy, they don't have much energy, and because of low energy they are not harmful. These waves are basically used for radar. So I hope you have got this thing. And radio waves are not only used for radar system, they are also used for television, radio, right? Radio transmission and all. So this is the concept of radio waves, and I hope you have got the concept of radar. So if we were to talk about X-band radar system, so X-band radar system simply means radiation of lower wavelength. So it simply means radiation of lower wavelength, right? Lower wavelength. And if radiation is lower wavelength, then it means higher frequency. In electromagnetic spectrum, they have higher frequency. Okay, this is the meaning of X band. तो अगर आप वापस देखोगे इसमें, तो ये वाला जो पोर्शन है, इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो ये वेवलेंथ ज्यादा है. तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है बैकवर्ड, टुवर्ड्स माइक्रोवेव पार्ट, राइट? टुवर्ड्स माइक्रोवेव पार्ट. तो अगर हम इसकी बात करते हैं एक्स बैंड रेडिएशन की, तो रेडिएशन ऑफ लोअर वेवलेंथ एंड approximately it is 8 to 12 gigahertz. This is the wavelength, or this is the frequency, by the way, because in hertz we give frequency. They have higher frequency range, right? Higher frequency.
And if we were to talk about wavelength, then this wavelength is around 2 to 4 centimeter, right? 2 to 4 centimeter. So you can also, if you were to see, हमें ये वेव्स दिखाई नहीं देती क्योंकि ह्यूमन जो आई है वो केवल विजिबल पार्ट ऑफ रेडिएशन को ही देख पाती है, लेकिन अगर इसको देख पाती तो शायद हम फिर ये वाला देख सकते थे, 2 to 4 सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ को देख सकते थे, राइट? So smaller is the wavelength. What is the beauty of this thing? Okay, so it allows to produce, this thing will help us, it allows to produce high resolution, you know, higher resolution. Simply this produce higher resolution image, higher resolution image. This is the benefit, this is the benefit of X band. This is the benefit of X band. If we were to talk about shortcoming, what is shortcoming for it? Shortcoming is very simple. Higher is the frequency, shorter will be its life, right? So simply you can say higher is the frequency, higher is the frequency, higher is the frequency, and remember frequency is related to energy by Planck's law. So if you know about this formula, E equal to होता है h nu, nu is the frequency, h is Planck constant whose value is 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड, राइट? तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन इसकी एक दिक्कत क्या है? इट इज शॉर्ट लिव्ड, it is short lived, and if it is short lived it means it is short range, it is short range. तो जो ऑब्जर्वेशनल रेंज है इसकी एक्स बैंड की, जो ऑब्जर्वेशनल रेंज है, द ऑब्जर्वेशनल रेंज, इसकी जो ऑब्जर्वेशनल रेंज है वो अराउंड 100 किलोमीटर है, राइट? 100 किलोमीटर, अगर ये फैक्ट एग्जाम में आता है तो यू शुड रिमेंबर इट, 100 किलोमीटर. एक दूसरा होता है सी बैंड. तो सी बैंड की जो रेंज होती है वो अराउंड होती है 250 किलोमीटर. उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि मैंगलोरू में इसको क्या करेंगे, मैंगलोर में उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे. तो दिस इज फॉर मैंगलोर रीजन. एंड दिस ऑब्जर्वेशनल डेटा फॉर एक्स बैंड रेडार is radar radar is 100 kilometer, which will be installed in Wayanad, Kerala, right? So this is the basic idea. Okay, I hope you got the basic idea. What is the huge? So another aspect of, another spectrum of discussion is what will be its utility. So if we were to talk about application uses, so this is going to use, it is going to use to track movement of soil particles. Okay, movement of particularly soil particles, and soil particles को मूवमेंट करने के चक्कर में ये क्या बता देगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड. ओके, alright, so I hope you got the point. And another aspect, if you want to know, it is used for temporal sampling. It will be used for temporal sampling, right? Sampling का मतलब होता है सैंपल को इकट्ठा करना, टेम्पोरल का मतलब होता है accumulated over a period of time. So for a long period of time it is going to use for accumulation of data, right? Accumulation of data of sample. So this is what is all about X-band radar system. So I think we have covered almost everything. There is another type of radar system which is based on the Doppler system. Doppler, you know, Doppler effect. आप लोगों ने हाई स्कूल साइंस में पढ़ा होगा Doppler effect. और Doppler effect बहुत सिंपल है. जैसे एक ट्रेन अगर आपके आस पास आ रही है, एक ट्रेन अगर आपके पास आ रही है, if you are observer here, right, and if train is coming towards you, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ती हुई नजर आएगी. एंड इफ अनदर ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तब भी आपको क्या दिखेगा, देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी. ओके, देयर इज अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, उसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बाय द वे, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस साउंड. तो साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स के, इफ दिस इज द सोर्स, इफ दिस इज द सोर्स, इफ दिस इज द सोर्स, तो सोर्स अगर अवे जा रहा है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, राइट? सो जस्ट अ मिनट, अगर हम इसको वापस लेके चलते हैं, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, राइट? तो इन अवर केस व्हिच इज ऑब्जर्वर इज अवर रिसीवर, राइट? एंड सोर्स इज मूविंग अवे, दिस इज अवे, सोर्स इज मूविंग अवे. तो सोर्स या तो दूर जा रहा होगा या सोर्स नजदीक आ रहा होगा. इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आएगा. एंड इन मीटियोरोलॉजी इट इज गोइंग टू यूज, वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर, इट कैन बी यूज्ड टू रिवील how
how fast objects are moving. Objects are moving, right? तो वी कैन यूज दिस फॉर हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. ठीक है, रोड में भी इसको यूज करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो इस बात को भी ध्यान रखना. एंड फॉर एग्जांपल रिलेटिव मोशन में जैसे एग्जांपल क्लाउड्स, फॉर एग्जांपल हाउ फास्ट क्लाउड्स आर मूविंग, सॉइल पार्टिकल्स आर मूविंग, राइट. तो ये सबको ट्रैक करने के लिए डॉपलर रेडार सिस्टम को यूज करते हैं, इसलिए इसको वेदर रेडार सिस्टम भी कहते हैं. दिस इज वेदर रेडार सिस्टम, राइट. So we wind up this class today here, and I think you like the class. And so if you like the class, don't forget to like and subscribe. Thank you so very much. We'll meet with another topic. Tab tak ke liye namaskar. Thank you.